हेलो एवरीवन, मेरा नाम अश्मिता है और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स सॉल्व करने हैं, तो आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स हो, कोई भी जॉब रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम्स हो, हम यहाँ पे सभी चीज़ों के लिए पढ़ाते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पोर्टल एक्सेस चाहते हैं और डाउट क्लियरिंग सेशंस चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी डिटेल्स मिल जाएगा। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन पे। द स्कूल, अच्छा, ये जो सभी क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे, ये सभी एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स पे बेस्ड है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स पे, ठीक है। तो आज हम मैक्स टू मैक्स 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो फोकस कीजिएगा। हम यहाँ पे कौन से सही आंसर हैं और कौन से गलत आंसर है, क्यों गलत आंसर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। द स्कूल नर्स notices that a 14-year-old who used to be an excellent student and very active in sports is losing weight and acting very nervous. The teen was recently checked by the primary care provider, that is PCP, who noted the teen had a very low level of TSH. The nurse recognizes that the teen has which condition? Hashimoto thyroid disease. Now, Hashimoto thyroiditis is a term that refers to hypothyroid issue or disease. Okay, so laboratory tests would reveal a high TSH level. So ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो कंडीशन आपको पता लग जाएगा। Next, Graves' disease. Now, Graves' disease is a hyperthyroidism and presence with low TSH levels. Weight loss होते हैं, excessive nervousness होता है। तो ये आप कह सकते हैं कि नर्स इस चीज़ को recognize कर सकता है टीन में कि ये कंडीशन उसको हुआ है। फिर भी देख लेते हैं बाकी सभी ऑप्शंस को। Hypothyroidism. Hypothyroidism is accompanied by high TSH level. Next, juvenile autoimmune thyroiditis. Now, juvenile autoimmune thyroiditis is a term referring to a hypothyroid disease. Laboratory tests would reveal a high TSH level. Okay, तो ये उतना भी अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ही हमें ऑप्शन चूज करना है। अगर ऐसे बोला जाता कि सिलेक्ट ऑल दैट में अप्लाई, तब हम एक से ज़्यादा ऑप्शन को चूज कर सकते थे, लेकिन अभी हमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन है उसको ही चूज करना है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो ग्रेव्स डिजीज का ही एक पार्ट है, एंड जो टेस्ट के हिसाब से हमें लाइक मिल जाता है कि ऐसा हुआ है, ये कंडीशन है और ये डिजीज है, तो ये मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ न्यूबॉर्न डेवलप्स टेटानी एंड हैज अ सीजर प्रायर टू डिस्चार्ज फ्रॉम द नर्सरी. The newborn is diagnosed with hypocalcemia secondary to hypoparathyroidism and is started on calcium and vitamin D. Which information would be most important for the nurse to teach the parents? They should observe the baby for signs of tetany and seizures. Now, the baby has hypocalcemia and is being treated for this condition by the teen. So, this should be reviewed with the family. तो ये इंफॉर्मेशन उतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। सेकंड, they should observe for weakness, nausea, vomiting and diarrhea. Now vitamin D toxicity, that is weakness, nausea, vomiting and diarrhea, is a serious consequences of the therapy and should be the top priority in teaching. ठीक है, तो ये एक हो सकता है अच्छा, ठीक है। Next, they should administer the calcium and vitamin D daily as prescribed. So, reminding the family to give the medication as prescribed is helpful and should be a basic part of discharge care. But it is not the most important information. तो इसीलिए ये भी नहीं कंसिडर करेंगे हम। Last, they should call the clinic if they have any questions about the care of the newborn. देखिए, गिविंग द फैमिली द फोन नंबर फॉर कॉलिंग द क्लिनिक इज अ पार्ट ऑफ बेसिक केयर फॉर डिस्चार्ज टू होम, बट इट इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए हम ऑलरेडी नंबर 2 को ही कंसिडर करेंगे कि सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन है, वाइटल इन्फॉर्मेशन।
A teen who was hospitalized for chronic kidney disease, that is CKD, developed symptoms of polyuria, polydipsia, and bone pain. Which body mineral might be causing these symptoms? Elevated calcium, low phosphorus, low magnesium, high aluminium hydroxide. कौन से चीज ये कौन से बॉडी मिनरल ये सभी सिम्टम्स प्रोवाइड करते हैं? तो सबसे मोस्ट लाइक common causes of secondary hyperparathyroidism are chronic renal disease and anomalies of the urinary tract. तो blood studies अगर आप देखेंगे तो that indicates very high levels of calcium because the kidney is unable to like process it. तो हम कह सकते हैं elevated calcium एक चीज़ है जिससे हम ऐसे symptoms को देख सकते हैं. And second, low phosphorus. देखिए renal impairment causes phosphorus levels to become very high, and clients in CKD are often put on low phosphorus diets to control the levels. तो ये तो नहीं होगा. Low magnesium. देखिए magnesium levels are elevated in CKD because magnesium is like excreted in the urine. So magnesium is not regulated by the parathyroid gland. तो ये भी नहीं होगा. High aluminium hydroxide. देखिए हाई एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कीप्स द फॉस्फोरस मोबिलाइज्ड सो दैट इट कैन बी एक्सक्रिएटेड. तो ये भी उतना अच्छा नहीं है एज ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. The family of a young child has been told the child has diabetes insipidus, that is DI. What information should the nurse emphasize to the family? One caregiver needs to learn to give the injections of vasopressin. देखिए वन केयर गिवर बता रहे हैं तो ट्रेनिंग टू केयर टेकर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द vasopressin reinforces the importance of the need to give the medication and ensures that medication can be given when the primary caretaker is unable to administer it. Like for someone on long term injectable medication, two people need to know how to administer it for the preceding reason. Okay, so ये उतना अच्छा information नहीं है. Second, children should wear medic alert tags if they are over 5 years old. Now, children should wear medic alert tags as soon as they are diagnosed. तो ये भी like question के हिसाब से ये नहीं जाएगा ये point भी. Diabetes insipidus is different from diabetes mellitus. Now, explaining that DI or diabetes insipidus is different from diabetes mellitus is crucial to the parents' understanding of the management of the disease. Now, DI is a rare condition that affects the posterior pituitary gland, like whereas the DM, that is the diabetes mellitus, it's a more common condition that affects the pancreas. तो इसीलिए ये आप कंसिडर कर सकते हैं कि व्हाट इंफॉर्मेशन शुड द नर्स एम्फसाइज टू द फैमिली. इसको ये आप कंसिडर कर सकते हैं. Next, over time, the child may grow out of the need for medication. Now, children with DI do not grow out of their condition. Okay, so and they will require close medical management and also medications for the rest of their lives. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन के हिसाब से नहीं जा रहा है. Next question है, a nurse is working with a child who has had a bone age evaluation. Which explanation of the test should the nurse give? देखते हैं कौन से एक्सप्लेनेशन टेस्ट के हिसाब से नर्स देते हैं. द बोन एज विल गिव यू अ डायग्नोसिस ऑफ योर चाइल्ड शॉर्ट स्टेचर. देखिए बोन एज जो है इट्स अ मेथड ऑफ असेसिंग द स्केलेटल मैच्योरिटी एंड डज नॉट गिव अ डायग्नोसिस. तो ये तो नहीं होगा. Second, if the bone age is delayed, the child will continue to grow taller. Now, the child with a delayed bone age may continue to grow. In many children with a delayed bone age, medication is required to help them continue to grow. तो ये तो नहीं होगा. Third, the X-ray of the bones is compared with that of the age-appropriate standardized bone age. देखिए, the bone age is a method of evaluating the epiphyseal growth, which centers of the bone using standardized age appropriate tables. तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन एक अच्छा है जो नर्स दे सकते हैं.
Last, if the bone age is not delayed, no further treatment is needed. Now, a bone age that is not delayed in a child of short stature is more concerning than if the growth were delayed. So, this means that further testing and evaluation are needed if the growth delay is to be reversed. तो ये भी उतना ज़्यादा अच्छा explanation नहीं है of the test. तो या आई विल कीप द वीडियो टिल हियर टुडे. अगर आपको ऐसे डिस्कशंस करने हैं, इंटरैक्टिव सेशंस चाहिए, तो आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं. कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन आप कर रहे हो, उसके लिए आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं. नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगा. एंड इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड. चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में.